आगे मिलेगा भी थोड़ा। ओह! Hello and welcome back to the channel. So this is day 6. So we have already left for the Pangong lake via Shyok and Agham. So it was really an adventurous journey till now. We were really feeling so hungry, so we stopped here at Turtuk to have something. We were already late in the morning, so पूरा सुबह पानी आ चुका था वहाँ पे already, तो water crosses हमें बहुत मिले हैं. So far so good. So far so good. अभी हम 10 किलोमीटर दूर है पैंगोंग से, अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर, 10 to 12 किलोमीटर. और अभी हमें यहाँ पे मूवमेंट दिख रहा है, तो उसकी वीडियो मैं अभी डालूँगा. We are at the highest saltwater lake, and that is the Pangong. Just look at the view.
Oof, it just looks so fantastic and amazing, and I really don't have any words to say about this Pangong lake. So it is said that 30% of this lake is in India, while the 70% of the lake is in China. और पानी नमकीनी होने के बाद भी ये ठंडियों में जम जाता है, and that is one of the most important fact about this lake. So far so good. वरुण, कितने बार आ चुके हैं यहाँ पे आप? ये मेरा सेकंड टाइम है पैंगोंग में, एंड इट्स ऑलवेज द फर्स्ट टाइम फॉर मी। और यहाँ पे कलर्स कितने दिख रहे हैं आपको? गिनिए और बताइए कितने कलर्स गिन सकते हैं आप इस पैंगोंग लेक के? यहाँ पे हमारा सी ग्रीन है, उधर ओशन ब्लू, एंड उधर स्काई ब्लू, और वहाँ पे डार्क ब्लू भी है। तो जो अभी हमने रूम्स बुक किए हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, छोटे छोटे केबिन्स टाइप के हैं। हमने यहाँ पे बाइक्स पार्क कर रखी हैं, और अगर हम अंदर जाके देखें कैसे रूम्स हैं, and we have already crossed Agham and Shyok